Nagesh, wonderful to see all of you. Nitin, Amol, Sagar, Navnath, wonderful to see all of you back after another wonderful week, which I'm sure you would have lived. Namaste, Vishali. Namaste, Deepa. Is my volume okay, Vidusha? Can you give me a hands up on that? Is my volume okay? So you can increase it a little bit. It would be good for YouTube. Okay, let me increase it from here. Okay. uh, Lovely to see all of you, Tej, Vishali. I got a bad throat, and this normally happens when I have a batch going on. So I have a uh, live live 360 batch going on, and as a result of that, कल बहुत हंगामा किया batch के अंदर. We had some awesome time, and so my voice has gone for a toss. So, sir, I'm joining from hospital. Dengue married with me on contract. That's nice. You're in hospital resting. At least you should give respect to dengue. Wish you speedy recovery. And I'm excited with this very thought process that in the hospital also you're listening to Happy Minds. That's so wonderful. Mm. Chalo, great. Let's move on. Those of you joined me for the first time for Happy Minds, welcome to Happy Minds. Those of you who have joined on YouTube, welcome, namaste, welcome to Happy Minds. Happy Minds is a journey which we have been taking for the last 25 odd years, 27 years, in fact. And this is Happy Minds number 1164. And every Saturday morning at 7, we have this get together, we have this satsang, जहाँ पर लोग आते हैं from all across the country, even from abroad. They join us if they can. And we have some awesome time making ourselves walk on a path of a better life, making ourselves realize that there's so much more we can do together, so much more we can do with our own selves. And this is one life which we have been blessed with. इस एक लाइफ में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं through this medium called Happy Minds. And as the name suggests, Happy Minds, it means that happiness is our choice. We choose to be happy in spite of whatever is happening around us. It is not because of this, it is in spite of. Because a lot of things will not happen the way we want. A lot of things will not go the way we want them to go. A lot of things, a lot of people around us will not behave the way we want them to behave. Because they are people, they are situations which are not in our control. So at least there is one thing we can take charge of. At least there is one thing we can take control of, and that is our own selves. And in our own self, what is that thing which makes a huge difference, the maximum difference, is our own um, uh, state of being. It's our own state of what state we are in. And I think the best state we can choose for ourselves is the state of happiness. So that's why Happy Minds. I always feel that every Saturday morning, ऐसे happy लोग आते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे वो जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे वो जिम में है, चाहे वो बेड में लेटे हुए हैं. They're in different states, but in this state, outside they can be in different states, physically they can be in different states, but internally they are in the state of happiness, and that is why Happy Minds. So one more time, welcome to all of you who have joined in for the first time. So normally what we do, we start with meditation, and then we have a round of some stories if people have shared with me, and we go on with the subject which is there for the day. So from my side, the story is that our Life 360 batch is on the 141st batch of Life 360. So we have around 80 plus participants there. Both hangama ho raha. I don't know how many of them are there in Happy Minds. They've had a full dose from my side yesterday. We kya masti, kya hangama, kya energy levels, from morning till late evening we were there, and we ended on a high. And then you can understand from my throat that the kind of energy levels would have been there. Every batch I'm amazed. Every batch I'm amazed with the kind of energies which people bring, the kind of willingness which people bring to make themselves a better version. And I always say that there is a way to live life, and then there is a better way to live life. Am I right or not? There's a way to do business, and then there is a better way to do business. There is a way to maintain relationships, and then there is a better way to maintain relationships. There is a way to take care of your body, and then there is a better way
to take care of your body. There's a way to wear your clothes, and then there's a better way to wear your clothes. And in every aspect of life, there is a better way possible. So the quest, जो हमारी सोच है, जो हमारी quest है, जो हमारी खोज है, it's always about that better way. And humanity has always surprised us. Every time, every day, every year, humanity has surprised us because there is somebody in the world who has found a better way than what it was prevalent before. Abhi Asian Games chalu hai, and so many records have been broken. So many national records of India have been broken. And it's isn't it amazing? कभी तुम सोचो इस बारे में कि एक record बन गया. This means the top people in the world, they have made a record. And now you feel अरे set हो गया record. And then somewhere somebody will come after some months, after a year, 2 years, some years, and somebody will break that record. कभी सोचा इस बारे में? Isn't it awesome कि कोई तो है जो who's out there to make it better, who's out there to do or to show to the world, hey, इससे भी अच्छा हो सकता है. तो जब स्पोर्ट्स में अदर फील्ड्स में ऐसे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं थ्रू देयर बिहेवियर, थ्रू देयर एफर्ट्स, थ्रू देयर एंडेवर, वो हमें बता रहे हैं कि यार एक और अभी मुकाम है, और भी एक पॉसिबिलिटी है, और भी इससे अच्छा हो सकता है. तो क्या ये हमें हिट नहीं कर रहा है? क्या ये हमें ये नहीं झंझोर रहा है और कह रहा है तुम भी अपने काम में अच्छे हो सकते हो? जो तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है, जो तुम्हारा पुराना बेंचमार्क सेट किया है, तुम उससे अच्छे बन सकते हो ना. तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, तो हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम तो काफी अच्छे हो सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट दिस हैप्पी माइंड्स इज ऑल अबाउट. अ क्वेस्ट, it's a search, it's a willingness to become a bit better than what we were yesterday. It's all about becoming a bit more engaging with life than what we were yesterday. And I was sharing in the batch yesterday with everybody. I was sharing in the batch with everybody yesterday that there is no ideal life. कोई आदर्श जिंदगी, because a lot of people they ask me what kind of an ideal life we should live, and I have no answer for that because there is no ideal life. और इस आइडियल लाइफ के पीछे जाना क्या है? Because who can tell you what's an ideal life? जो आप सोचते हो ये आइडियल लाइफ है, somebody has broken that record and moves to the next level. That becomes an ideal life. So there is no ideal life, but there can be a happening life. Your life is happening. You are pulsating with life, with energy. That is possible. Because हर चीज आपके मुताबिक नहीं जाएगी ना. हर चीज आपके हिसाब से तो नहीं होगी. Not all things will go right. Some things will go wrong, some things will go haywire. और होता ही है. तो जब चीजें हिल जाती हैं, चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हैं, तो फिर जो आपका मन में वो कॉन्सेप्ट ऑफ एन आदर्श लाइफ, ऑफ एन आइडल लाइफ, इट गोज फॉर अ टॉस. सो more than seeking an ideal life, can we ask ourselves, that is it a happening life? क्या इसके अंदर एनर्जी वाइब्रेट हो रही है? क्या इसके अंदर क्या एक हमसे मिलके या हमसे बात करके किसी को लाइफ फील हो रही है? क्या हमारी जिंदगी को देख के कोई कह रहा है या कोई कह सकता है कि यार ये this person, no matter what happens to this person is living life to the fullest. I think that is possible. What happens here, ये जो यहाँ जो धड़कन है, ये तो जबरदस्त धड़कनी चाहिए. I think that's the only way to describe an ideal life. So ideal situations होंगे नहीं, लेकिन एक happening life तो हो सकती है. तो ये happy minds is all that effort week after week after week, कि हर वीक एक वीकली शॉट मिला, एक वीकली डोज मिला, और उससे हम अपनी लाइफ को और हैपनिंग करें. So all those who have come in, I think that's what happy minds is all about. तो आप लोग कैसे हैं? चलो मुझे बताओ. मेरा एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से मैंने आपसे पूछा नहीं, how are you all in life? Let me listen to some answers. How are you all in life? Let your voice get back in strength quickly today. It will have a badge to take today and tomorrow also. Hanji, how are you all today? जोश में, झकास, great, mast, great, fabulous, mast.
बहुत बढ़िया, बढ़िया, मस्त। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा टाइप करो फटाफट। हाउ आर यू? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मैं क्या, जिंदगी तुमसे पूछ रही है। द मोमेंट you open your eyes, the moment you're up, the moment you're awake, life is asking you, how are you this very morning? Energetic, excelling in every day, excelling every day. Great. हमारे साथ रघुनाथ का किस बात की चिंता? ये बात, ये भी सब लोट डाल दो भगवान पे, डाल दो लोट तो। भगवान, हम तो कर्म ऐसे ही उल्टे सीधे करेंगे, लेकिन तू देख लेना, हमें क्या चिंता, तू है तो। टकाटक, टॉप ऑफ द स्काई। ना ना, अभी तो चेंज हो गया है, इट्स नॉट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ऑन टॉप ऑफ द मून। भारत ने बता दिया दुनिया को, इट्स ऑन टॉप ऑफ द मून। हाउ आर यू ऑन टॉप ऑफ द मून? ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, let's move on for today. I'll have a quick happy minds with you, and I'll just share something beautiful with all of you. I was thinking what to share. I was thinking uh, this very morning, what could be the thought which could be the weekly shot for you? What is that thing which you should take away from today's happy minds? And a beautiful thought came in, which is not my thought, but a thought which came from what is written in the Constitution of India. हमारे देश के संविधान में एक सेंटेंस लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 51A। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एंड दैट सेंटेंस सेज। तो जब मैंने वो सेंटेंस के बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि हाउ वंडरफुल दैट दिस हैज बीन थॉट ऑफ, बट हाउ सैड दैट दिस हैज नॉट बीन टॉट, दिस हैज नॉट बीन शेयर्ड with with the clarity and with the passion in which it should have been. Because जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने सोचा उसके बारे में, लेकिन आम जनता को मालूम ही नहीं है वो स्टेटमेंट क्या है। एंड दैट स्टेटमेंट इज अंडर द आर्टिकल 51A, वेयर इट सेज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो हम सब इस देश के सिटीजन्स हैं, और हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है। उस ड्यूटी के अंदर ये स्टेटमेंट है, एंड द स्टेटमेंट इज टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activities. वो statement है, to strive for excellence in all spheres of individual and collective activities. This is enshrined in the constitution of our country under the fundamental duties of a citizen. तो हम लोग क्या है ना, we have fundamental clarity about the fundamental rights of a citizen. मेरा एक्सप्रेशन का हक है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच दे दो, हम इसके एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के नाम पे हम देश की वाट लगाएंगे, ये हमें सब मालूम है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम बात नहीं करते। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में किसी ने हमें कूट कूट के नहीं बताया, लेकिन हमारे हक के बारे में हमें बताया गया। एंड दैट इज द फ्लॉ which I see in the society at large. In fact, this constitution, when I was reading about the background and the history of the constitution, this lot of work was put in thinking about the constitution of UK, the constitution of US, and things like that. और वहां से बहुत कुछ समझ के फिर अपने देश का constitution बना. And it has been more or less on rights. और जबकि हमारा जो संस्कार, हमारी जो संस्कृति है, it has never been on rights. It has always been on धर्म, कि हमारा धर्म क्या है। Not धर्म in terms of the religion which you have understood, but धर्म मतलब हमारी ड्यूटीज क्या है। तो एक पुत्र धर्म क्या होता है, एक पिता का धर्म क्या होता है, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, एक नागरिक का धर्म क्या होता है, एक व्यापारी का धर्म क्या होता है। तो we have, that's the way the संस्कृति was, the culture of our country was. तो धर्म से हम आगे हक पे, हमारा हक क्या है बताओ। Anyways, that's a different story, कभी हम बात करेंगे उसमें। So that's a मेरा कभी कभी मेरा अंदर का मेरा रोष जाग जाता है when I think of this. तो हम धर्म का पाथ छोड़ के हम हक के पाथ में आ गए। सो जितने भी ये लड़ाई हो रही है, जितने भी ये you see the disturbance happening in society, it's happening because people are more clear about their rights. People are not clear about their धर्म, कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका धर्म क्या है। And if you are only clear about your rights but not your responsibilities, not your duties, you will always create chaos. अगर एक घर में एक बच्चे को
अपनी सिर्फ हक मालूम है, मेरा हक क्या है, लेकिन उसको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मालूम है, तो वो घर में कैसे सुख शांति आएगी, कैसे उस घर अ, में एक हैप्पीनेस का एक माहौल होगा। इट विल ऑलवेज बी समवेयर सम फ्रिक्शन विल हैपन, बिकॉज किसी ना किसी का हक उसको लग रहा होगा कि मुझे नहीं मिल रहा है। और वो होता है जब हम जीते हैं साथ में, तो किसी न किसी का हक तो दबता है, जाने में अनजाने में। किसी न किसी को लगता है कि अरे मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन अगर वो ही जीने का एक बन जाए, hello, I'm there. Can you give me Yes, a thumbs up on this? I lost you for a few seconds, but now you are. Since when I was lost, I don't know. I've been speaking and uh, तुम तो मुझे कब से नहीं सुन पा रहे हो, मालूम पड़ा मैं ऐसे वैसी बात कर रहा हूँ हवा में। Anybody? So you Yes, can no, you continue can to hear me say. now, that I understand. हाँ जी, So you can directly continue. It was 10, डायरेक्टली 20 कंटिन्यू, बहुत seconds. बढ़िया। जिसको समझ में आया ठीक है, वैसे भी किसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। Okay, so I was talking about this very thought process that somewhere we are more aware of our hak, of our rights, right? And we are not so much conscious, so much focused on our responsibilities, our duties. तो अगर कभी समय मिले तो पढ़ना, पढ़ना के धर्म पे जीना क्या होता है, and go to the Sanskriti side of a country, go to the way this country, this nation has been built. ये भारत कैसे बिल्ड हुआ, उसमें कभी थोड़ा फोकस करना, कभी जाना उसमें, एंड यू विल बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड हर एक चीज का धर्म डिफाइन किया गया है, हर एक चीज का। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज, एवरी रोल, एवरी रोल उसको डिफाइन किया गया, और हर रोल का धर्म क्या है वो बताया गया है। एंड सेम इज द केस इन इफ यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, यू हैव डिफरेंट पोजीशंस। So right from your receptionist to your sales to your accounts to your purchase to your production to your dispatch, सब एक आपकी positions हैं, और हर एक position का हम बोलते हैं, when I teach business, and every sensible person would understand this, that for you to do business well, you got to have those positions, because हर एक काम के लिए एक आदमी लगता है, तो वो काम क्या है वो डिफाइन होना चाहिए, और उस काम के हिसाब से आपने आदमी को लाना है, एक इंसान को लाना है, और आपने उस इंसान ने उस काम को निभाना है। तो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके जॉब, हम बोलते उसको जेडी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो इस तरह हर देश के हर नागरिक को अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए, हर घर के हर मेंबर को अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। तो आज उसी पे बात करता हूँ हल्का सा। एंड वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच यू एंड मी वी हैव, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activities. जहां पर भी हम अकेले काम कर रहे हैं, जहां पर भी हम collectively as a group काम कर रहे हैं, we got to strive for excellence. मैं इसको हल्का एक कदम और आगे ले जाता हूं। We should have passion for excellence. We should have passion for excellence. But आप देखो ना, पिछले कई सालों में हम लोग बड़े फेमस हो गए हैं in terms of जुगाड़। We have passion for जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ में क्या है ना, काम चलाओ काम है, चल जाएगा ना, हो जाएगा ना, चल रहा है ना, तो चलना इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस, कि बस कैसे भी करके चलना चाहिए, उसमें जुगाड़ करो, उसमें कुछ भी आप सेटिंग करो, लेकिन वो चल जाएगा। तो ये चलता है एटीट्यूड is the reason why our country has not been able to see those days which it saw in its past. जो हमारी पहले की ग्लोरी थी और अब की ग्लोरी में कमी क्यों है? Not because हमारे रिसोर्सेस कम हो गए हैं पहले के मुकाबले, not because we have been given less. It's because of this approach of ours. हम चलता है एटीट्यूड में आ गए, और चलता है एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया, कैसा भी करके उसको चलाना है। So there is no passion for excellence. There's a passion for जुगाड़, and एक तो किताब भी लिखी गई है जुगाड़ के ऊपर। And I always say to entrepreneurs,
प्लीज डोंट गो फॉर जुगाड़। अगर एक बार जुगाड़ की आदत पड़ गई तो फिर आप एक्सीलेंस की ओर नहीं जाओगे, और आप एक्सीलेंस की ओर नहीं जाओगे, हाउ विल यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल? Whether it be your business, whether it be your life, if jugaad is the way forward, you will not strive for the best. You will always strive for abhi ka ho jaye, abhi ka nipट jaye, abhi ka chal jaye. So ask in your life, all of you listening to me, ask yourself, is my striving for jugaad कि अभी चला लूं कैसा भी करके, और is my striving for excellence कि नहीं यार बेस्ट होना चाहिए, it has to be the best. तो अगर ये फर्क आ गया ना कि यू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और ये हमारी जवाबदारी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है यू गोट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। तो अगर ये स्ट्राइविंग हो गई एक्सीलेंस की ओर, तो आप देखो आपका बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस, आपकी जिंदगी कितना ऊपर चली जाएगी। व्हेन यू सेटल फॉर नथिंग लेस देन द बेस्ट, एंड बड़े फनी लाइफ है यार हमारी। आप देखो कभी, व्हेन यू डिसाइड दैट यू विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट, मेरी बात को सुनना, but it's a funny story of our lives that when you decide that you will not settle for anything less than your best, the world starts giving you the best, because the world has the best, but it will only give to those who strive for the best. The world has records to be broken, but it will only be for those who strive to break them. There is something or the other coming out every year. In the business world, people are amazing us with their products. In the social world, people are amazing us with the kind of interventions they're doing to improve society. In the sports world, athletic world, sports people are amazing us. अभी वो नेपाल का एक बच्चा था, उसने 9 बॉल में यानी हाफ सेंचुरी मार दी। वो नेपाल से आया बच्चा, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया 2020 का। So there are people who will kind of amaze us in ways which we can't even imagine. इसका मतलब बेस्ट अभी भी बाकी है ना ह्यूमैनिटी का, और वो बेस्ट जो आ रहा है अभी तक कैसे आ रहा है? somebody is striving for excellence. और अगर हमारी लाइफ में कहीं ग्रोथ नहीं आ रही है, is because somewhere हम जुगाड़ वाला काम कर रहे हैं। So there are two words which I spoke to you about: passion for excellence. तो passion क्या है? Passion is that inner urge, is that inner fire. It is that state which will not make you rest. That's what passion is all about. So when you have passion, it's a very powerful resource. It's a very powerful form of energy. लेकिन ये पैशन जो है, ये किस लिए यूज हो रहा है? क्या ये पैशन एक जुगाड़ के लिए यूज हो रहा है, या ये पैशन जो है किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए यूज हो रहा है? सो इट्स अ ग्रेट फ्यूल। इतना बढ़िया फ्यूल है ये पैशन दैट इट कैन डू वंडर्स। बट ये सिर्फ फ्यूल है, इस फ्यूल को दिशा देनी पड़ती है, इस फ्यूल को एक व्हीकल देनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ पेट्रोल है, डीजल है, बिजली है, इट्स अ फ्यूल। इट हैज टू बी गिवन डायरेक्शन by putting it in the right place. So if you can have this passion for excellence, फिर आपकी जिंदगी कहां से कहां चली जाएगी? But we have passion for awesome things. We have passion for sleep. We have passion for doing time pass on social media. Some people are passionate for reels. मतलब छोड़ेंगे नहीं साले को, बाहर सारी रील्स देख के खत्म करेंगे। Some people are passionate for binge watching. They will finish the series चालू करके रात भर का लक्ष्य सेट करके इसको आज खत्म करके छोड़ेंगे। डायरेक्टर ने इतनी मेहनत से बनाई ये सीरीज, इतना एक्टिंग करी है लोगों ने, इतना सब नेटफ्लिक्स ने, सब ने, ओटीटी ने इतनी मेहनत करी है, हमने इंटरनेट लगाया है, उसकी पूरी वसूली करेंगे। पैशन है हमें सर। Some people have a passion for destroying their lives. I'm right or not? तो पैशन जो है सर, पैशन बहुत जबरदस्त चीज है, एक फ्यूल है। उस फ्यूल को अगर आपने सही दिशा दे दी तो फिर गाड़ी कहां से कहां चली जाएगी। सो इफ यू कैन जस्ट गिव अ डायरेक्शन टू दिस पैशन फॉर एक्सीलेंस। क्या कह रहा है गणेश? अच्छा लगा थप्पड़। कहते हैं, आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता सर। सो हेलो, यू आर देयर विद मी ऑल ऑफ यू? कुछ तो बताओ।
You're there with the director. Oh, great, great. Stay alive. Mm. I pulled one of my senior team members for HM. Chalo, good. Yes, sir. Passionately listening and understanding. Wow, wow. Khush kar diya, Anjali. I'm passionate about reels. Oh my God. Vivek. श्रुति, आपने जगा दिया सर. ओ माय गॉड. तो मेरा आपसे सवाल क्या है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि पैशन होना बड़ा जरूरी है लाइफ में. Yesterday I was talking in the batch about passion for something. जो something नहीं मिल रहा है, it's okay, but passion जो है ना, it's a very powerful form of energy. So a lot of people they can have this question that, are you passionate about this activity? Are you passionate? What are you passionate about? I don't know, but can I be passionate about this life of mine? That I will live it to the fullest. I don't know if I'm passionate about a sport, about an art, about a profession. मुझे नहीं मालूम यार. And लोग मुझसे पूछते हैं, sir, was it your passion to come into training and speaking? I still don't know यार. But I'm passionate about living life. I'm passionate about exploring and maximizing life. I'm passionate about this clarity of mind कि यार एक ही जिंदगी है. इसको मैं ऐसे कैसे जी लूं? इसको तो खुल के जीना पड़ेगा ना. इसको तो एकदम मस्त जीना पड़ेगा. एक ही लाइफ है, एक ही शॉट है लाइफ में. अगर फिल्म की बात करूं, इसमें कोई रीटेक ही नहीं है. इसमें कोई वापस दोबारा कैमरा एक्शन वाला बात ही नहीं है. ये तो एक ही है, बस कैमरा चालू है, एक्शन चालू है. ये तो एक ही इनिंग्स है. इसमें कोई ये टेस्ट मैच भी नहीं है कि सेकंड इनिंग्स खेलने को मिलेगा. यही वर्ल्ड कप है हमारा. जब एक ही है तो फिर उसके बारे में पैशनेट क्यों नहीं होंगे? उसके बारे में ऊर्जा लेके क्यों नहीं आएंगे? उसके बारे में जान क्यों नहीं लगाएंगे? जस्ट वन लाइफ. सो ये पैशन जो है, इस पैशन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सोचने वाली बात. सो मेरा आपसे ये कहना है आज के एचएम में, आस्क योरसेल्फ ऑल द एक्टिविटीज व्हिच यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ दोस एक्टिविटीज. और उसमें आप आइडेंटिफाई करो जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, थिंग्स व्हिच मीन टू यू, थिंग्स व्हिच मेक सेंस टू यू. उसमें तो कम से कम पैशन लेके आ जाओ कि यार इसको मैं बेहतरीन करूं. इस एक्टिविटी को मैं अच्छा करूं. मैं कर रहा हूं ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना. नाउ लेट मी गेट द बेस्ट आउट. मेरा विश्वास करो, जीरो डिफेक्ट इज पॉसिबल. मेरा विश्वास करो दैट परफेक्शन के नजदीक जाना पॉसिबल है अगर आपके अंदर ये पैशन के प्रति, ये एक्सीलेंस के प्रति पैशन आ गया. You can go in for serving your customers in the best possible way. If you're not satisfied with anything less than your best, your customers will be so very delighted with you. So कहीं ये जुगाड़ वाली जो हमारी सोच है ना, हमें इस जुगाड़ की सोच से बाहर निकलना. और जब एक्सेलेंस नहीं होता ना, तो क्या होता है देखो लाइफ में, in the absence of excellence, you have a lot of explanations going on. कोई भी आदमी अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, इसका मतलब उसके काम में एक्सीलेंस नहीं है, क्योंकि उसको अभी डिफेंड करना पड़ रहा है. ये काम मेरा ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऐसा ऐसा हो गया. अरे बिकॉज सर वहां पर वो नहीं था, बिकॉज वो नहीं मिला, बिकॉज रिसोर्स नहीं थे, बिकॉज लेट हो गया, बिकॉज गाड़ी नहीं मिली, बिकॉज wherever there is explanation, there is no excellence. Excellence needs no explanation. When it is the best, you don't have to explain to anybody. It's only when it is mediocre you have to keep on explaining why it happened the way it happened. You there with me on this? So let your life, let the way you live your life not be an explanation here. The way you live a life, let there not be an explanation कि आपको बताना पड़ रहा है, आपको लोगों को मतलब कन्विंस करना पड़ रहा है कि ये काम अच्छा क्यों नहीं हुआ. ये क्या जिंदगी है? When you break a record,
Do you have to give an explanation for that? It's only when you don't do the activity the way it should be done that your entire तुम पूरे किताब निकालते हो explanation की why it could not be done. So can we, in one area, at least in a day, live a life in such a way where we don't have to explain to anybody? We don't even have to explain to ourselves. Just in one area at least. And then one area can become 2 areas, can become 3 areas, can become 4 areas. And that's the way we live our lives. It'll be so very wonderful, isn't it? And the world is willing to give its best to you. The world is willing. Only when we are giving our best. The world succumbs. The world gives in to those who are excellence oriented. World gives in. What is Sagar saying? When you share the thought of fundamental duties, that time I feel very proud that I'm a citizen of India. By this thought, I'm taking charge, ownership of my life, my house, my colony, my city, and those are absolutely Sagar. Love you for sharing this. So we all have our responsibilities and we have our duties. As a citizen of this country needs people who are excellence oriented. This country does not need people who are jugaad oriented. कैसे भी करके जुगाड़ करके जुगाड़ कब करना चाहिए? कभी पूछो अपने आप से, कब करना चाहिए जुगाड़? When we have no other option. जब हमने सारे रास्ते अपना लिए और वो सारे रास्ते अपना के वो काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो काम तो करना है. The passion for getting the work done will make us go for a jugaad because we did our best, we could not find a solution, so we went for a jugaad. But आपकी शुरुआती जुगाड़ से होती है तो दिक्कत वाली बात. शुरुआती होती है with this thought कि यार कैसा भी करके उसको कर दो. And you will see a lot of, the moment I'm saying this, आज तुम देखना, दिन भर तुम अपनी आंखें खुली रखना and दिन भर तुम घूमना मार्केट में बाहर देखना, तुम्हें एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे जुगाड़ के. किसी ने बोर्ड को जुगाड़ से लटका के रखा हुआ है अपनी दुकान के बाहर. जुगाड़, वो कब सर पे गिर जावे किसी के समझ नहीं आएगा. There is no excellence in that. जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक्सीलेंस से चूक गया ना, कहीं ना कहीं उसने जुगाड़ वाला काम किया. I was reading about one incident which happened in one of the towns in the country. वहां पर इलेक्ट्रिशियन से कुछ 2-3 बच्चे की डेथ हो गई. वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो जहां पे जो ट्रांसफार्मर था, उसका जो वायर नीचे जो बोर्ड था वो खुला हुआ था, उसका कैप नहीं था. तो किसी ने वो जुगाड़ करके उसको चालू कर दिया ट्रांसफार्मर को. सम इलेक्ट्रिशियन सम कॉर्पोरेशन का जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का आदमी होगा, उसने लाइट चालू करनी थी, लाइट चालू कर दी. अरे उसके कैप क्यों, उसका कवर क्यों नहीं लगाया? बस जुगाड़ में आपने कर दिया. कोई बच्चे खेल रहे थे वहां, खेल के वो उसका टच हो गया, वो 2-3 बच्चों की डेथ हो गई. जुगाड़. All accidents are because of jugaad. I'm not against jugaad. I'm saying jugaad cannot be the starting point. Jugaad cannot be the thought process to start your activity, start your day, start your whatever activity, your process you are into. It is the last and final thing. जब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, जुगाड़ देख. First thing is excellence. All aspects of your life, please do bring in excellence. अभी मुझे सुन रहे हो आप, right? मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो there's some work going on in my study where I take happy minds from. वहां पर कुछ काम चालू है, तो मैं अभी शिफ्ट करके I've come to my living room. तो लिविंग रूम में आया हूँ. I've got everything which I should get. So मेरे लाइट्स भी, माइक भी, सब कुछ मैंने उसको फिट किया. So I want everything to go on perfectly well. I'm striving for excellence in the setup. But there are times when I'm traveling out there and I do my best to get things organized, but कभी-कभी नहीं हो पाता है. So I do some जुगाड़ there. तो कभी सूटकेस के ऊपर मैं रखता हूँ अपना लैपटॉप, उसके ऊपर कैमरा, फिर कहीं कुछ, बिकॉज वहां सेटअप नहीं है मेरा. वहां एक्सीलेंस किस रूप में लेके आऊं मुझे नहीं समझता, तो मैं फिर जुगाड़ कर लेता हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट द वे आई डू इट. दैट्स नॉट माय लाइफ. इट्स नॉट एवरी डे आई डू लाइक दैट.
But if you come to from where I take it, I have things lined up. There's no jugaad. I keep on asking myself, इसको और अच्छा कैसे करना है? तो कहाँ से कैमरा आएगा, कहाँ लाइट फोकस होगी, क्या पहनना है, क्या? So there is an excellence orientation towards that. If you can bring that aspect of excellence in your life, तो जो आप गाड़ी चला रहे हो ना, वो गाड़ी साफ रहेगी आपकी. जिसको जुगाड़ की आदत है ना, वो गाड़ी को सिर्फ अपने एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज करेगा और उसमें बैठ के चले जाएगा, लेकिन उसको साफ नहीं करेगा, ना करवाएगा. बट जो एक्सीलेंस ओरिएंटेड बंदा है, वो गाड़ी को चकाचक रखेगा, अंदर से भी बाहर से भी. जो एक्सीलेंस ओरिएंटेड बंदा है, उसकी गाड़ी में फ्यूल जो है ना, हमेशा हाफ से ऊपर रहेगा. जो जुगाड़ वाला बंदा है, वो लास्ट में फ्यूल खत्म होने को आएगा, तब वो उसको लगेगा अच्छा फ्यूल भरवाने का है. These are some attributes, some aspects of a जुगाड़ guy. कैसे भी करके जुगाड़ करके आज पहुंच जाते हैं ना ऑफिस, बाद में देखेंगे ना, कैसे भी जुगाड़ करके कुछ काम कर लेते. बट जो एक्सीलेंस वाला बंदा है, उसकी नजर एक्सीलेंस पे रहेगी, वो स्ट्राइव करेगा. और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. इस देश को चाहिए बहुत एक्सीलेंस ओरिएंटेड बंदे यार. क्यों नहीं हमारे देश से कुछ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं? क्यों नहीं हमारे देश में कुछ बहुत जबरदस्त इन्वेंशन हुए इतने सालों में? बिकॉज वी आर ऑल इन जुगाड़ मोड. वो तो पिछले कुछ सालों से कुछ प्रोडक्ट्स बनना चालू हो गए. Why we talk about German technology and Japanese technology? Because इन लोगों ने कभी जुगाड़ को अपने यहाँ स्कोप ही नहीं दिया. They never accepted जुगाड़ as a way out. They always said we want excellence, and that's why these countries are known for their excellence in whatever they do. And everything they have the thought process of doing it in an excellent way. हमारे यहाँ तो we take pride in जुगाड़. हमने जुगाड़ कर लिया. We take pride in. हमने कर लिया. So मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा रिक्वेस्ट, humble request to all of you, minimize जुगाड़, maximize excellence. और जब excellence से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो जुगाड़ अपने आप निकल जाएगा, अपने आप कहीं ना कहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. So strive for excellence. और ये आप सबकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है. We all live our life out of excellence. We have passion for excellence. कोई सवाल? एक बड़ा अच्छा फीडबैक आया था मुझे, मैं आपको कहना भूल गया, लेकिन मैं आपके कुछ सवाल के बाद मैं आपसे बात करूंगा. हाँ जी. What is your understanding from what I have shared so far? जब कभी भी आप एक्सप्लेनेशन देते बैठते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई है, कहीं ना कहीं एक्सीलेंस नहीं है. जहां पर बढ़िया काम होता है, वहां पर एक्सीलेंस नहीं होता. हाँ जी. Anybody who wants to come for some sharing, for some questions? Would love to hear. I hope you're well. I am well. My throat is paining. That's the only thing. So I want to talk less today. I got a long day. I have a long day with the batch, and the batch is waiting for me. Absolutely. That's what it is, Anjali. Along with the rights, हमारे हक के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी आती हैं. इनफैक्ट हक को नीचे रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को, अपने धर्म को ऊपर रखो. तो आस्क योरसेल्फ, व्हाटएवर रोल यू आर प्लेइंग, आस्क योरसेल्फ इन दैट रोल, मेरा धर्म क्या है? सो यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर, तो आपका पिता धर्म क्या है? यू प्लेइंग द रोल ऑफ अ हस्बैंड और अ वाइफ, कि स्पाउस का धर्म क्या है? यू प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन, पुत्र धर्म क्या है? राइट? एंड यू विल सी lot of clarity will come in, and that's what you got to strive for. And can I strive? Can I do that role? Can I play the role in the best possible way? क्या मैं उस धर्म को निभा पाऊंगा in the best possible way? That's how it is. So रिश्तों में जुगाड़ नहीं चलता है यार.
रिश्तों में तो एक्सेलेंस ही लगता है. इनफैक्ट एवरी एस्पेक्ट एक्सेलेंस इज रिक्वायर्ड. So we set the wrong goals, just like you mentioned. I will finish web series and hota hai, true. Does our education system responsible for this? I mean, yeah, to a certain education system हमारा नहीं है ना. I mean, this education system of ours is not ours. It's a borrowed education system from England. The more you understand this, the more you will realize कि हमारे साथ क्या गेम हुआ है. Way back in the 18th century, when the East India Company came to India, they came here, but a lot of back-end work was happening there. So they had 5 or 6 institutions in England, which were specifically set up for training people that how and what kind of a system should be set up in India. All over England, 5 big universities or 5 big campuses were created where officers were getting trained, people were getting trained as to how to have these systems in place, right from education system of ours to our the administrative systems and things like that. तो ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, ये हमारा है ही नहीं. हमारा तो गुरुकुल सिस्टम था. तो वो गुरुकुल सिस्टम हट गया, and this system came into existence. And as a result, we are all talking about our rights. We are all talking about हमारे हक. We're not talking about our responsibilities. Which school is teaching us about our responsibilities? आज की सिचुएशन क्यों ऐसी हो रही है? एवरी whether it be the child or whether it be a citizen, सब धरना देने पे बैठे हुए हैं. हमारी मांगे पूरी करो. ये कौन सी मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए? आप कोई धरना दिखाओ मुझे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे. एक धरना होना चाहिए ना. वी शुड गो टू जंतर मंतर एंड से हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे. कोई तो करे ऐसा धरना. सब मांगे पूरी करने वाले धरने हो रहे हैं. कोई जिम्मेदारी पूरी करने वाला धरना नहीं हो रहा है. So that's I think that's where we are. We have lost our way. While working in corporate management, sets targets which need excellence, but they don't allot resources which are aligned with excellence. How do we handle this? Okay, this is a good question. आप तो बोल रहे हो सर एक्सेलेंस पे जाओ, एक्सेलेंस पे जाओ. जब हम काम करते हैं तो वहां पर जो है हमें रिसोर्सेज नहीं दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है, हमसे अपेक्षा रखी जाती है दैट यू काइंड ऑफ produce excellence. ऐसे कैसे होगा? So if I know it's a difficult situation, it's not an easy situation that we are demanded excellence but not given the environment of excellence. अब अगर ऐसा है, I think you got to excellently put across what you require to produce excellence to the management as much as possible. Sometimes they're also not aware. Sometimes they feel that it is with that what they have provided that you can produce. Sometimes we are also not aware that it is the resources are there. So I feel that a very strong communication has to happen, not in terms of a negative communication, but a strong means clear communication should happen. So this is the output which is expected out of me, and I take responsibility for this output. For this output, I would require 1, 2, 3, 4, 5 things. And why I would require these 1, 2, 3, 4, 5 things? What will happen because of each of these resources which you give to me? If we are able to communicate very clearly, then there are very high chances that the management would understand that. Sometimes the perception is such कि हमें लगता है कि हमें रिसोर्स नहीं मिले हैं या रिसोर्स उस काबिल नहीं है. Sometimes हमारा भी उन रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने की क्षमता हमारी कम होती है. So I think it's a both way understanding. So understanding को कैसे लाने के लिए क्या करना चाहिए? Very strong communication. So if you have a very strong passion for excellence, you will not sit quietly. Well, ultimately effect तो आप पे हो रहा है ना. You will raise a voice in a polite way, in a right way, and you will make the management aware we need resources. You will not just sit and say भाई मेरा excellence क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि वो resource नहीं देते हैं. मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं उन रिसोर्सेज को लेके आऊं.
And sometimes hota hai, management says, "Bhai, we don't have the resources, we don't have the capability to give the resources." Then what do we do? If you are a person who's full of excellence, who's passionate for excellence, फिर आप कुछ अपने लेवल पे करोगे जिससे आप उन रिसोर्सेज को की रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करोगे. और अगर नहीं होता है, जब आपने सब कुछ कर लिया, आपको लगता है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, you hunt for an organization which can give you the resources. That's the last resort which you have with you. Hmm? हाँ जी. So what is this, Sanjeev? So इस अब की बार 100 बार. What is this? Hmm? I'm not able to understand this. Can you elaborate on this? हाँ जी. चलो. तो अब मुझे बताओ आप लोग इस हफ्ते क्या करोगे आउट ऑफ एक्सीलेंस. चलो मुझे एक चीज बताओ. अब तुमने मुझे सुन तो लिया. मैं आपसे कह रहा हूं बी पैशनेट फॉर एक्सीलेंस. अब मुझे बताओ क्या करोगे. अच्छा ओके. जो संजीव कह रहा है हमने 100 पार कर लिया. अरे वाह वाह, बधाई हो सबको, सारे भारतीयों को बधाई. दैट फ्रॉम 70 मेडल्स वी हैव मूव्ड ऑन टू 100 मेडल्स दिस टाइम. जबरदस्त. 40-50% rise, 40% rise हो गया अभी तक. 7 for 28. So from what we got last in Jakarta से हमें अभी इस बार we got 40% more medals this time. Thank you for sharing that, Sanjeev. Thank you. चलो मेरा question to all of you is, क्या करोगे इस हफ्ते out of excellence? Tell me one thing which you will do out of excellence, which you will strive for excellence. मतलब it's not about the world's best, it's all about your best. I will give my best. क्या करोगे बताओ. सुनने को तो बड़ा आसान है ना, मुझे सुन लिया आपने. अब मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं कि आप क्या करोगे. This week we'll start YouTube video with excellence. Okay, good. Think and write down. फटाफट लिखो. क्या करोगे. एक काम, सिर्फ एक काम. You will do excellently. It can be as simple as every day I will make my bed. उठने के बाद मैं अपना बेड बनाऊंगी या बनाऊंगा with excellence. मैं इतना बढ़िया बेड बनाऊंगा कि बेड को सोने की इच्छा ना करे, इतना सुंदर बेड दिखना चाहिए मेरा. जब सुबह उठ के I'll make my bed. The way I will fold my blanket, it will be so wonderful. कि ऐसा लगेगा अभी मार्केट से खरीद के आया हुआ है. इतना बढ़िया उसको मैं फोल्ड करूं. It can be as simple as that. It can be as simple as कि जब मैं सुबह ब्रश करूंगा, पेस्ट करूंगा, वापस पेस्ट को बंद करके वहीं रखूंगा, ब्रश को वहीं रखूंगा जैसे हिला ही नहीं था. It can be as simple as that. I will service my two-wheeler. I study first citation of High Court and Supreme Court every day. ठीक है, वाह, ठीक है. One thing which you find, which you will do out of excellence. और मैं आपको एक हल्का सा एक हेल्प करता हूँ इसमें. Pick up something which you're doing daily. Pick up something which you're doing daily. Right? And pick up something which is simple. कभी कभी हम मुश्किल काम ले लेते हैं तो उसमें तो वैसे ही मुश्किल आता है, तो एक्सेलेंस कहां से आएगा. तो आई एम सेइंग हमें आदत डालनी है एक्सेलेंस की. दैट आई एम नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट. कि जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट काम है उसमें तो मुझे बेस्ट की आदत लगनी चाहिए. तो आई एम जस्ट सेइंग पिक अप समथिंग एज सिंपल एज मेकिंग योर बेड, एज सिंपल एज टेकिंग ऑफ योर शूज एंड कीपिंग इट इन द कैबिनेट वेयर दे आर सपोज्ड टू बी केप्ट. कि वो शूज निकाले तो मैं I will open the laces with excellence. I'll put my socks inside the shoe with excellence. तो एक्सेलेंस की एक आदत, जब एक एक्सेलेंस की आदत बन जाती है ना, that becomes the way for life. That becomes a way of life also. Then that's where you execute yourself. So I'm just saying one. बहुत सारे aspects में लाओगे तो परेशान हो जाओगे. Just one. And then next week another one. Then next week another one. And maybe इस जन्म में आपके मरने से पहले you will become an excellence oriented person. I'll keep office timings perfectly. ठीक है. You decide. It can be as simple as what I've shared with you. सर सोचना पड़ रहा है.
I will raise the voice and communicate clear expectations. Absolutely. चलो बहुत बढ़िया. I will study the citation. हो गया. चलो. Tell me, बहुत से लोग जरा भी नम हो गए. सुनने को इतने लोग सुनते हैं, but when it comes to bloody action, तो सबको ऐसा सांप सूंघ जाता है. अच्छा, हमें एक्शन में करना है. हमें लगा एचएम सुन के जिंदगी अच्छी हो जाएगी. हमें लगा कि बस अभी सर को सुन लिया है, अभी फूल बरसेंगे, राह के सारे कांटे निकल जाएंगे, सारी मुश्किलात हट जाएगी, हैप्पी माइंड सुन के. अगर ऐसा है तो ऐसा होने वाला नहीं है. सो यू लॉट ऑफ यू आर पैसिव बाय नेचर. पैसिव मतलब हिलते नहीं हो, करते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो. दिस इज वन पॉइंट. सुनना इज द स्टार्टिंग पॉइंट. करना इज the step after that. So what is the action which you will bring out? I will increase reading time from 15 minutes to 1 hour. No, it's not about, I'm not, see, you have to understand, excellence is not about आपने टाइम इंक्रीज कर दिया. इस बात को समझो आप. एक्सेलेंस कम, आप रीड कर रहे हो ना, तो 15 मिनट रीड कर रहे हो ना. मैं ये नहीं कर रहा 15 को 16 मिनट करो. वो 15 मिनट शुड बी मिनट्स ऑफ एक्सीलेंस. वो 15 मिनट आप किताब पढ़ रहे हो ना, तो किताब पढ़ने के सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो लेके आ जाओ. मैं कह रहा हूं 5 मिनट पढ़ोगे किताब यार. ब्रिंग द बेस्ट 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ टू दैट बुक. सो इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? सो आई विल रीड अ बुक, आई विल हैव माय पेन. इफ इट्स अ growth book, I will have a colored pencil with me. I'll underline the best things which I would have read. I will sit with a notebook and write down a few things which I will find very interesting in my life. Maybe that's a way to read a book. And you said, I've read the 5 minutes with excellence. तो 15 मिनट को 1 घंटा करना is not excellence. वो 15 मिनट को ही excellence से जीना है. लक्ष्य का. So I'm giving you an assignment for this week. One area I want you to live with excellence. One area. And you will share. Next HM मुझे share करो, डालो social media में, send if you have the numbers of our office, send us your whatever experience you have had, and understand what excellence is. It's not about bigness. Excellence can be in that small activity itself. किसी चीज को, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर दिन ये काम करते रहोगे. मैं कह रहा हूं जो भी काम आप कर रहे हो, उस काम को आप बखूबी करो. कोई एक काम पकड़ लो, आप उसको बखूबी करो. अगर आप बर्तन भी धो रहे हो घर में, तो उसको मतलब इट शुड बी एन एक्ट ऑफ एक्सीलेंस. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, संतोष ने कहा कि सर मैं 15 मिनट पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ूंगा. तो अगर ये बर्तन धो रहा होता है, क्या बोलता, सर मैं सुबह 15 मिनट बर्तन धोता हूँ, अभी मैं 2 घंटा बर्तन धोऊंगा. मैं आस पड़ोस के घरों का बर्तन भी धोने का काम चालू करूंगा. इट्स नॉट, एक्सीलेंस इज नॉट दैट. एक्सीलेंस इज वो जो तुम बर्तन धो रहे हो 15 मिनट, वो 15 मिनट में बर्तन सबसे अच्छे ढंग से कैसे धुल सकते हैं, वो आप करो. राइट. तो सागर कहता है, सर मैं अपनी वाइफ के पैर दबाता हूँ. आई विल नाउ डू इट एक्सीलेंटली. हाँ, अभी वो 10 मिनट तुम पैर दबाते हो, 10 मिनट का 20 मिनट नहीं करना है. वो 10 मिनट में ही सबसे बढ़िया ढंग से पैर कैसे दब सकते हैं. गला नहीं दबाना है बीवी का, पैर दबाना है. सबसे बढ़िया ढंग से जो है पैर कैसे दब सकते हैं. यू डिसाइड. राइट. एंड लेट इट बी द बेस्ट 10 मिनट्स ऑफ गिविंग अ प्रेस टू योर वाइफ. दैट्स हाउ इट इज. सो आप ड्राइव कर रहे हो, व्हाट कुड बी द बेस्ट वे टू ड्राइव द कार. आप एक एस्पेक्ट में ले आओ एक्सीलेंस. मेरा विश्वास करो, लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा देखो आप. यू विल बी सरप्राइज्ड विद योर ओन आउटपुट कि हाँ ये मैं हूं. यू विल बी सरप्राइज्ड. जस्ट बी कॉन्शियस. एक एस्पेक्ट में, सिर्फ एक एस्पेक्ट में एक्सीलेंस ले. एंड आई विल लव टू लिसन टू योर स्टोरीज. यार इनफ ऑफ पैसिव लिसनिंग, इनफ ऑफ जस्ट लिसनिंग टू मी एंड डूइंग नथिंग इन योर लाइफ. मुझे कोई मजा नहीं आता. तुम लोग ऐसा आते हो सुनने के लिए हर एचएम में, मुझे कोई ऐसा जॉय नहीं होता है. द रियल जॉय फॉर मी, द रियल किक फॉर मी would be you making some moves in your life, you working on yourself, you showing me some area of excellence, you becoming better, you showing me, you giving me results, you sharing stories with me. That's where I will get my kick. So ऐसा wholesale में आके मुझे सुन लेते हो, that's not very exciting.
ओके, तो सब मैं आप लोगों को देखना चाहूंगा with some stories next week. I will take an early exit today. I got a batch lined up. अभी time भी हो गया है. Yes, it's time for me to also get ready for the batch, and I'll see you next HM. I'll be traveling next HM, but I'll be traveling with my whatever I can carry with myself, and I'll take a HM from wherever I am. I will. It will be an outbound HM from my side for all of you. Okay. So till then, live a life out of excellence, have a passion for excellence, and minimize jugaad. Jugaad is the last option. First option, the beginning option, the starting option is excellence. Can I do it excellently? Hmm? And if that is the way we live a life, life has so much more to give to all of us. Wish you all live a life of excellence, and you will be amazed by the way the world will start giving you in abundance. Mera vishwas karo. It will happen. Hmm? So take charge and see you next HM with some stories of yours.